Assalamualaikum students. Today in the course of research method in psychology 1 we will learn other methods of data collection in survey. One is telephonic interview and another is inter-survey. Telephone survey is one kind of survey research method that a researcher can use to collect the data. Telephone interview was used frequently for brief survey. Whenever researcher decide to prepare the brief survey report to conduct a brief survey, he or she can use telephone interview to collect the data of the research participants. The random digit dialing technique permits researcher to contact efficiently a generally representative sample. So researcher can make the sample representative by using random digit dialing technique. तो digit dialing technique में कि जो उसके पास numbers होंगे उनको contact numbers होंगे participants के phone number होंगे उनको researcher जो है वो randomly select कर सकता है. When researcher randomly select the contact number of the participants, he can reduce the sampling error while at the time of selecting the participant for the research project. Telephone interview provides better access to dangerous neighborhood, locked building and respondent available only during evening hours. So sometimes the researcher couldn't make the direct contact with the research participants because participant resides in the area that doesn't seem suitable, secure for the researcher और researcher वहाँ उस dangerous neighborhood के लिए जाना जो है वो difficult होता है. सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जिनकी वजह से रिसर्चर जो है वहाँ पर विजिट नहीं कर सकता. इसी तरह कुछ एरियाज हैं लॉक्ड होते हैं, बिल्डिंग्स लॉक्ड हैं या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नो वन नॉट एवरी पर्सन कैन गो देयर इवन फॉर गुड. तो उस तरह के एरियाज भी होते हैं कि जहाँ पर अलाउ नहीं होता. कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं और वैसे भी ऐसा कल्चर जहाँ पर लोगों को बहुत से सिक्योरिटी थ्रेट्स हो या जहाँ वायलेंस के केसेस हो और जहाँ पर और बहुत सारे क्राइम हो तो वहाँ पर जो है वो डाटा कलेक्शन जो है वो डायरेक्ट जाकर पार्टिसिपेंट से मिलना और मीटिंग अरेंज करना जो है वो रिसर्चर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. एंड समटाइम रिसर्च पार्टिसिपेंट्स और रिस्पोंडेंट्स आर अवेलेबल ओनली इन इवनिंग. क्योंकि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स अगर वो कहीं ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ वो 9 to 5 या 8 to 4 8 to 5 अगर वो एंगेज हैं और जो है अपने काम में बिजी रहते हैं, ऑफिस टाइमिंग है या मॉर्निंग में और कोई उनकी एक्टिविटीज हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट available in the morning and they ask you to conduct the interview in the evening when they are at. तो इस तरह की सिचुएशन में भी टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है वो बेहतर हो जाता है. सुटेबल मेथड एक रिसर्चर के लिए होता है कि वो उन सिचुएशन में भी डाटा कलेक्ट कर सकता है जहाँ एक डायरेक्ट 1-to-1 सिटिंग में बैठकर डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू करना मुश्किल होता है या एडमिनिस्ट्रेशन इस केस की डिफिकल्ट हो जाती है. Interviews can be completed more quickly when contacts are made by phone. Interviewers can be better supervised when all interviews are conducted from one location. So, a researcher can complete the telephone interview in a very short period of time when they contact with the participant select for the research. So, interviews can also supervise the procedure when the interview is being conducted from one location कि कोई एक ऐसी लोकेशन है या इस तरह के वहाँ इंटरव्यू किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है तो उसकी सुपरविजन भी बड़ी अच्छी तरीके से हो जाती है. कि जैसे कोई एक एरिया आपने सेलेक्ट किया है या कोई एक टाउन है, एक सिटी है तो वहाँ पर जब इंटरव्यू किया जा रहा है तो एक तो वो इजीली भी हो भी जाएगा और दूसरा उसको चेक करना भी आसान होगा कि इंटरव्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है नहीं हुआ है. There are some disadvantages of telephonic interview. A possible selection bias exists when respondents are limited to those who have telephones and the problem of interviewer bias remains. So, interviewer bias, selection bias occur when researcher couldn't have the contact details of the large number of samples. So, in that situation, a researcher will select less number of people who will not will be representing the entire population. तो वो जो आपका इनका जो sample होता है research project का, that will not be representative sample. तो क्योंकि बहुत से लोगों के पास फोन भी नहीं होता है और जो है आप देख लेंगे PTCL कितनों के घरों में होगा. एक वक्त था
कि जब कुछ लोगों के पास PTCL होता था। अब जब से सेल फोन है तो सेल फोन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सेल फोन नहीं है, जो यूज नहीं करते हैं। तो इन दैट सिचुएशन देयर आर चांसेस to lose the sample that apparently seems suitable for the research project. तो requirement को भी पूरा कर रहा है person criteria को, but he or she couldn't take part in the study because he or she is not having the telephone facility at home. There is a limit to how long respondents are willing to stay on the phone. An individual may respond differently when talking to a faceless voice than they would to a personal interview. So another problem the researcher can face in telephonic interviews that respondent are not agree to talk to the interviewer for the specific time. Researcher वो जो होते हैं participants बहुत देर तक फोन पे नहीं होते हैं, और फिर कुछ कल्चर ऐसे चीजें हैं कि जिसमें जैसे लोग जो है फोन पर उतना सिक्योर फील नहीं करते हैं कि वो रिसर्चर को देर तक जो है वो आंसर करें और उसको जवाब दें और उसके क्वेश्चंस के आंसर करें, क्योंकि पीपल हैव मल्टीपल टास्क टू डू इन अ डे। तो अब अगर एक पर्सन जो है वो ऑफिस में भी काम करके वो आया है, उसको घर पर भी काम है, तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो इतनी देर तक इंटरव्यू के क्वेश्चंस के वो जो क्वेश्चंस उनका आंसर करे। इसके अलावा रिस्पोंडेंट जो है वो इफ ही इज गिविंग इंटरव्यू टू रिसर्चर via phone, then researcher cannot recognize the person. Suppose I have registered myself for the research project, and my researcher thinks that I'm talking to him, I'm answering the question whom he or she has registered for the research project, but someone else is answering on the behalf of me. तो वो वहाँ पर उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? फेसलेस वॉइस अगर है तो कैसे पता चलेगा कि ये वही पर्सन है कि जिसको हमने इंक्लूड किया कि भाई इससे हमने डाटा लेना है, अब वो फोन पे बात कर रहा है तो हो सके। ये प्रॉब्लम अब फिर भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ हद तक जो है वो कम हो गया है, क्योंकि अब स्काइप पर हो सकता है, ईमो पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स हो जाती है, तो उस वीडियो कॉल के जरिए जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा ये कह सकता है कि हु इज टॉकिंग, लेकिन अगर उसमें भी जो है वो एक पर्सन ने अपनी पिक्चर नहीं दी तो फिर वो रिसर्चर जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। कल्चर चेंज में रिजल्ट इन लो रिस्पॉन्स रेट फ्रॉम टेलीफोन सर्वे। तो कल्चर प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हर कल्चर का अपना एक पैटर्न होता है, स्टाइल होता है। जैसे अगर एशियन कल्चर, साउथ एशियन कल्चर में देखें तो वहाँ पर फीमेल जो होती है वो दे हेजिटेट इन टॉकिंग टू अननोन पर्सन, और स्पेशली अगर रिसर्चर जो है वो मेल है, अगर फीमेल है, मेल रिसर्चर है, अननोन है, तो फीमेल विल नॉट ओपनली डिस्कस एंड एवरीथिंग विद द रिसर्चर। और इसी तरह हमारे यहाँ फीमेल हैं, बहुत सी फीमेल हैं जिनके पास, यंग गर्ल्स हैं जिनके पास इस तरह मोबाइल नहीं, हर एक के पास नहीं होता है, लेकिन सबके पास नहीं होता, उनकी कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसी तरह फैमिली जो है वो अलाउ नहीं करती है कि अपनी फीमेल को किसी अननोन पर्सन से बात करे फोन पर और उसको अपना डाटा प्रोवाइड करे। तो इस तरह के कल्चर इश्यूज भी आ जाते हैं। और फिर कुछ कल्चर पर हार्डली ट्रस्ट ऑन ईच अदर, तो वो ट्रस्टवर्दी रिलेशन ना होने की वजह से भी जो एक लो रिस्पॉन्स रेट जो है टेलीफोन सर्वे के जरिए अब वन may assume that individual from higher socioeconomic group are more likely to have multiple phone numbers and this might be over-representation in a survey based on random digit dialing. Researcher has used the digital dialing technique to select the sample, but despite that, person may be registered more than one time because he or she is having more than one cell numbers. तो हमारे यहाँ लोगों के पास एक से ज्यादा फोन नंबर होते हैं, उन्होंने दो डबल सिम की उनकी जो मोबाइल उनके पास होता है, डिफरेंट सिम होती है। अब दो डिफरेंट सिम के साथ नंबर हैं, अगर वो सेल नंबर भी रिसर्चर जो है वो उनको भी यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू हैव द कांटेक्ट विद द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, तो फिर वो नंबर एक से ज्यादा होने की वजह से इशू ये होगा कि वो पर्सन जो है he or she can be registered for twice, तो वो दो दफा हो जाएगा। तो अब वहां पर वो किस
डेटा आइडेंटिफाई करेगा, तो डिफरेंट फोन नंबर्स के साथ लोग हो जाते हैं, तो वो ओवर रिप्रेजेंटेशन सर्वे में होने के चांसेस। और फिर कुछ सोशियोइकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, तो फिर वो एक डिफरेंस आ जाता है कि कुछ लोगों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्योंकि दे कैन अफोर्ड, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास सिंपल मोबाइल है, तो वो दोनों में डिफरेंस होगा। फिर ये भी एक बैरियर जो है वो उसका रोल प्ले। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फोन solicitation for selling products and requesting contribution has led many people to be less willing to be interviewed. So people are fed up of companies who will sell their products using phone. ये इस तरह के इश्यूज है जिसकी वजह से लोग जो होता है ना वो कहते हैं कि अच्छा ये फिर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ गया, चाहिए फिर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो people due to that people take less interest in telephonic interview. वो उसको समझ नहीं पाता है। और वैसे भी जिस सोसाइटी वो कल्चर वो सोसाइटी जहाँ पे रिसर्च कल्चर नहीं है, एक रिसर्च कल्चर होता है ना, तो पीपल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ research and its significance as well. तो जहाँ पे रिसर्च कल्चर नहीं होता, people do not know how a research is significant for individual and the society and the whole society as well. तो वहाँ पे तो रिसर्च का उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ ज्यादा मुश्किल हो जाए उनको। फिर पहले उनका एक इमेज होता है ना, परसेप्शन बना होता है कि ये कोई प्रोडक्ट कंपनी है और ये अपनी प्रोडक्शन के लिए करते ही हमारा डाटा ले जाएंगे। जैसे एनजीओ का कुछ कॉन्सेप्ट लोगों के होता है कि एनजीओ जो है वो डाटा ले लेती हैं और फिर इसको मिसयूज करती हैं। इस तरह की चीजें लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मिसकंसेप्शन लोगों का है। तो रिसर्चर के हवाले से भी यही होता है कि जैसे अगर कोई रिसर्चर है, अगर ये डाटा लेता है वो समझते हैं कि पता नहीं ये हमारे इंफॉर्मेशन को जो है वो मिसयूज करेंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो लोग जो है वो जो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनको एक मतलब उनको स्टडी में पार्टिसिपेट करने से रोक, फिर वो विलिंग नहीं होंगे टू टेक द इंटरव्यू via phone telephone. Options that allow for screening calls and voicemail have made it easier for people to avoid unwanted calls. So people can also avoid the calls and they have right to avoid those calls which they do not want to attend. तो अब वो नहीं करना चाहते हैं, स्क्रीन आउट कर देते हैं। स्क्रीन अगर है नंबर शो हो रहा है वो कहते हैं चाहिए हमने तो इसको अटेंड नहीं करना, तो वो भी होता है। फिर लोगों ने नंबर जो है वो सेव किए होता है अपने फैमिली मेंबर के नेम के साथ, वो किसी ने भाई के उससे सेव किया होता है, फादर या अम्मी के नाम से वो सेव किया होता है। तो इससे वो होता है कि जब वो कॉल आती है तो दे इजीली रिकॉग्नाइज कि हाँ ये जो है ये हमारा नोन पर्सन है। तो अननोन नंबर से कॉल आती है तो दे कैन अवॉइड that call. People who are doing two jobs are rarely to answer the phone. So the people do multiple tasks at a time. Some people have to do more than one job to meet their family finance. तो उसको उनके expenses इतने होते हैं, उनके अपनी needs इतनी हैं कि वो एक से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो इतनी उनकी एक पहले ही फटीग और उनके लिए एक स्ट्रेस होता है, तो ऐसी सूरत में वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो फिर एक नई एक्टिविटी और एक नया काम जो है उसके साथ खुद एंगेज करें या खुद को बाउंड कर लें कि भाई हमने जो है वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है। तो फिर उनके लिए मुश्किल होता है कि वो आपको अपने घर पर भी नहीं बुला सकते हैं, तो घर पर बैठ कर भी उनके लिए फोन कॉल्स को अटेंड करना और इंटरव्यू देना जो है वो डिफिकल्ट है। Now in this class activity you have to answer the following questions. How will you make the telephonic survey effective for the research purpose? Suppose you are interested in doing telephonic survey and you have reviewed the disadvantages associated with that, but despite that you want to use that method. So how will you improve its effectiveness and reduce the disadvantages associated with telephonic interview? Students, you have to suggest 5 strategies through which you can make it effective and reduce the disadvantages. So you have 15 minutes to complete that task. The fourth kind of survey research method is internet survey. Internet survey and internet survey participants complete a questionnaire online and click on a button or to have their responses recorded. So here researcher will send questionnaire to the participant via email and participant will read the statement one by one and submit their answer. And this questionnaire will be sent back to the researcher. The scores of the participant
participants will be automatically recorded in the system. Internet survey is an efficient, low-cost method for obtaining survey response from large, potentially diverse and underrepresented sample. So this method is very efficient method. It doesn't cost very much, and you can use that method with limited financial resources as well as you can also collect the data from a large number of sample and diverse sample. तो वो diverse क्या है कि जैसे आप जो है वो ईमेल के थ्रू और इंटरनेट सर्वे से आप बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों से भी जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि आपको डिफरेंट प्रोविंसेस पाकिस्तान के वहाँ के रेजिडेंट से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप घर बैठे उस इंटरनेट सर्वे के थ्रू आप बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बलूचिस्तान के लोगों से भी ले सकते हैं, सिंध के लोगों से भी ले सकते हैं। अब ये डाइवर्स हो गई ना, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कंट्रीज से भी कर सकते हैं और डिफरेंट कल्चर से भी आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स को ले सकते हैं। तो इवन यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन और कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश एंड सो ऑन। तो ये फिर वो सैंपल जो है वो उस तरह नहीं होगा जैसे आप रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं रैंडमली लेते हैं, उस तरह तो नहीं होगा, बहुत लार्ज सैंपल होगा। लेकिन आप ये बड़ा मेथड जो है वो एफिशिएंटली आपको और कम से कम अखराजात में आपको जो है वो इंफॉर्मेशन और डाटा जो है वो प्रोवाइड करेगा फॉर द रिसर्च पर्पस। There is a potential for literally millions of responses to be automatically recorded and summarized as they process by the receiving server. So, due to the latest technology and development, you can collect the data from millions of people and their responses will be automatically recorded and summarized as well. तो वो स्कोरिंग भी हो जाती है, उनकी स्कोर होकर भी मिल जाते हैं, कंपाइल होकर ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी रिसर्चर के पास आ जाते हैं। Programs also exist to permit manipulation of variables and the random assignment of participants experimental condition. In some condition, you can manipulate the independent variable if there is a requirement to do that. तो वो उसको कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे सिस्टम अगर इस तरह का है आपके पास कि आप उसको मैनिपुलेट करके लोगों के रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं तो कर लें। और रैंडम असाइनमेंट पार्टिसिपेंट्स की अगर कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन डिजाइन की है रिसर्चर ने तो फिर उसके अकॉर्डिंगली रैंडम असाइनमेंट्स भी पॉसिबल हो सकता है। वन एडवांटेज तो कॉस्ट एंड एफिशिएंसी की इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ आपके बहुत ज्यादा उस तरह एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी आप कर सकते हैं क्योंकि आप नहीं जा सकते ना। अब इफ यू ट्रेवल टू गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस, सो यू नीड मोर मनी, टाइम एंड एनर्जी टू मूव फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन। तो सूबे टाउन में इतना आपको वो चाहिए तो फिर आप एक सूबे से दूसरे सूबे में और फिर कंट्री से बाहर तो हर एक के लिए पॉसिबल भी नहीं है, कैसे करें। तो इंटरनेट सर्वे फिर इस तरह की जो सिचुएशन है वहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। Thousands of participants who vary in age, ethnicity and even nationality can be contacted through a few keystrokes on a computer. So इस latest technology ने ये बड़ा आसान कर दिया। It has made it easy for you to get access to the people who are living very far away from you. तो अब रिसर्चर यहाँ है, यहाँ से आप UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आप अफ्रीका की कंट्रीज हैं और इस मिडल ईस्ट में आप कहीं भी लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, एथनिसिटी, रिलीजन, नेशनलिटी। तो उनके बाकी डेमोग्राफिक्स तो साइड पे चले जाएंगे। तो थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स से आप ये डाटा ले सकते हैं थ्रू दिस फैसिलिटी। ऑनलाइन क्वेश्चनर पेपरलेस, thus saving natural resources and cooking cost। तो अब ऑनलाइन क्वेश्चनर है, प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है कि आपने बस एक क्वेश्चनर जो डिजाइन किया या ऑलरेडी आपने स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर यूज किया उसको बस आपने कन्वर्ट करना होता है। तो ये पेपर का भी कोई वो नहीं है, इससे आपके रिसोर्सेज बच रहे हैं, आपके पैसे बच रहे हैं, नेशनल रिसोर्सेज बच रहे हैं, कॉपी करवाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर आपके उतने पैसे खर्च नहीं होते जितने दूसरे रिसर्च मेथड में आपके होते हैं। तो ये बड़ा एक सेव आपके रिसोर्सेज को सेव करने का एक प्रोसीजर है। पार्टिसिपेंट में रिस्पॉन्ड व्हेन इट इज कन्वीनियंट एंड डू सो विदाउट लीविंग द कंफर्ट ऑफ देयर home, office, dorm room or other internet sites. So it is very feasible for the participant to do the questionnaire received via email. They can answer the question while sitting at home, office, in the rooms, internet or even
they can answer the question while sitting in public places. तो वहाँ पे बड़ा उनके लिए होता है, कहीं भी आप देख लें वो कर सकते हैं। बस ये है कि वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब ये बाउंड नहीं है कि जैसे सपोज एक रिसर्चर मेरे पास आती है और she request me to respond to take part in the study she has designed, तो वो मेरे पास बैठती हैं, ऑफिस में आएंगी, I have to manage the time, तो वो फिर मुझे और एक्टिविटीज के साथ करना पड़ेगा, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं क्वेश्चनर को फिल करूँ। तो मेरे लिए बड़ा फ्लेक्सिबल टाइम है कि ओके आई हैव रिसीव्ड अ क्वेश्चनर थ्रू ईमेल, तो आई कैन आंसर दैट क्वेश्चनर और I can participate in the study evening late night or even in the evening when I have nothing else to do. तो उस वक्त मैं फ्री हूँ, तो फ्री टाइम देखकर मैं कहीं भी इसको कर सकती हूँ। Reach to large and potentially diverse sample, internet also has a potential for accessing groups that typically are underrepresented in psychological research. तो ये एक इसकी है कि diverse sample जो है वो आपके पास है और access जो है वो बहुत different groups के, variety के groups के साथ है जो psychological research के लिए आपको required होता है। It has opened the door to cross-culture research, and if you are interested in doing cross-culture research, then you can use internet survey, क्योंकि इसमें तो आप डिफरेंट कल्चर और उससे रिसर्च कर सकते हैं। क्रॉस कल्चर रिसर्च बड़ी आसान हो गई है इंटरनेट सर्वे से, अब डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कल्चर के लोगों को आप स्टडी कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को, उनकी पर्सनालिटी। तो ये इंटरनेट सर्वे जो है इसने काम को बहुत आसान कर दिया। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट सर्वे, बोथ रिस्पांस रेट वाइज एंड सिलेक्शन वाइज आर लाइकली टू बी प्रेजेंट। प्रॉब्लम विद लो रिस्पांस रेट कैन occur due to non-responding just as it does for other survey methods. So as happen in other kind of survey research method, here response rate also influence the results. A researcher if send the survey questionnaire to 1,000 participants and he receive responses from only 500-600 participants, then their response rate will be very low. और एक ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजा है तो हाउ मैनी कैन आंसर यू, तो बहुत से लोग जो है आंसर देना नहीं भी पसंद करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है। और इसी तरह जो सिलेक्शन वाइज है कि ईमेल्स को सेलेक्ट किया है और ईमेल्स के थ्रू जो है वो पार्टिसिपेंट से कांटेक्ट किया है, तो वहाँ भी एक सिलेक्शन वाइज हो सकती है, क्योंकि रिसर्चर जो है पार्टिसिपेंट्स को अगर एक पार्टिसिपेंट उसकी एक से ज्यादा ईमेल है तो देयर आर चांसेस टू इंक्लूड द पार्टिसिपेंट्स हु हैव मोर देन वन टाइप ऑफ ईमेल आईडीज, तो वो फिर इससे भी इशू क्रिएट हो सकता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू सर्वे आर गोइंग टू डिफर ऑन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अ कन्वीनियंट सैंपल कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल हु हैव इंटरनेट एक्सेस। सो here characteristics of the sample will be different in a way that researcher include the participant, only those participants in the study who have internet facilities and who use email ID. So this mode of communication make it easy for only those participants to be included in the scientific study who are with internet facility or have or know how to use the computer for that purpose. तो जिन लोगों को पता होता है इंटरनेट की फैसिलिटी से ईमेल यूज करते हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कभी ईमेल किया ही नहीं, जिनका ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल क्रिएट ही नहीं किया, जैसे हमारे कल्चर में फीमेल हैं, दे आर हाउसवाइफ्स, नॉट एवरी वुमेन यूज ईमेल और इंटरनेट अगर आप करती भी हैं तो वो ज्यादातर वो फेसबुक कर लेती हैं या जो यूट्यूब पे देख लेंगी कुछ अपने जो है वो फेवरेबल कोई प्रोग्राम देख लेंगी, लेकिन इस तरह कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करती, तो फिर वहाँ पे डिफिकल्टी हो जाती है। फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तो नहीं होगा ना, वो तो एक कन्वीनियंट सैंपल होगा जो है वो आपकी रिसर्च में जो है वो पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जिनके पास इस फैसिलिटी से जिनका एक्सेस है। Researchers can obtain sample of respondent by posting research notice on website that promote research opportunities or by simply creating a web page with the survey and wait for users to locate it via internet search engine. So researcher will advertise the research project and brief the research project via website and using web page
and then he will keep waiting for the participant who are willing to take part in the study. तो अब वो जो पार्टिसिपेंट होगा वो जब देखे रिसर्च को, उसको उसका ऑब्जेक्टिव देखेगा, उसको पढ़ेगा, एडवर्टाइजमेंट को देखेगा, पेज को लोकेट करेगा, फिर से सर्च करे, तो अगर वो उसके इंटरेस्ट की होगी तो ही वो पार्टिसिपेट इसमें करेगा. There is no way to generate a random sample of internet users, so researcher cannot randomly select the email IDs of the internet users. तो यहाँ मुश्किल हो जाता है कि किस तरह वो रैंडमली सेलेक्ट करेगा. फोन नंबर तो फिर भी रैंडमली सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडीज को रैंडमली सिलेक्ट करना मुश्किल होता है. Lack of control over the research environment is also a major disadvantage. Lack of control raises serious ethical issues related to information, informed consent, and protecting individual from harm as a consequence of their participation. So researcher will not have much control over the environment, research environment. That is a major limitation of the internet survey. And due to lack of control, serious ethical issues can be raised, especially related to the informed consent and the right of the participant to be protected from the psychological and physical harm if it is associated with the research. तो जब यहाँ पर environment पे कंट्रोल नहीं है, किस तरह का है, एक पार्टिसिपेंट है, वो घर बैठ के कर रहा है, ऑफिस में कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, रिसर्चर को क्या पता. रिसर्चर तो उस एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता. When researcher collect the data in face-to-face setting, then researcher has full control over the environment, and researcher is responsible to create the environment where participants feel emotionally and physically secure enough to respond to the questions asked by the researcher. तो यहाँ पे तो वो सूरत हाल नहीं है, डिफरेंट है. तो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो उसका भी इशू हो सकता है, लेकिन जो है ऑल्दो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म is attached with the questionnaire sent to participant via email, despite that some ethical issues can be raised related to that ethic informed consent. तो यहाँ पर ये भी इशू हो जाता है. फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप किस तरीके से, if the participant while responding to the question experience little bit anxiety or sadness, then how can you reduce or how can you reduce the sadness and anxiousness, or how can you prevent them from further psychological harm. तो ये भी एक थोड़ा मुश्किल यहाँ पर मसला हो जाता है. It is not easy to determine that if respondents have a clear understanding of the instructions or they are creating multiple submissions. So when participants are using more than one email ID, so they can respond to a survey questionnaire and submit their responses more than one time. तो इस तरह multiple submission हो जाती हैं, and researcher cannot easily identify the multiple submission of the same participants. क्योंकि देखिए, अगर हम email ID बनाते हैं तो we create our email ID with different names. तो वो different name के साथ है, और बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो मेल है तो फीमेल के नेम की बनाते हैं, फीमेल है तो मेल के नेम की बनाते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल वर्ड से बनाते. तो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाते हैं ना कि अगर मेरे एक से ज्यादा, मेरे 3 ईमेल आईडीज अगर हैं और मैंने 2 से सबमिट कर दिया, तो how could researcher identify that? Respondents may participate alone or in group under distracting condition without the knowledge of the researcher. So researcher, while sitting at home, is answering the research questions, and suppose if he's sitting with his or her friend and when he responds to a question, his or her friends also advising him or directing how to respond to a question. तो इतनी distracting condition और इस तरीके से होगा या influence होगा, तो फिर वो जो result होगा ना, that will not be the accurate result. तो वहाँ पर researcher के लिए मुश्किल हो जाएगा. कि इसी तरह अगर कोई public place पे है, कोई airport पे है, बैठा हुआ है और वहाँ पे वो ओपन करके कहता है चलो मैं इधर ही बैठे बैठे मेरे पास टाइम है तो मैं आंसर कर दूं सर्वे क्वेश्चन को, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो एनवायरनमेंट में, तो किस तरह के रिस्पॉन्सेज आएंगे. तो वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ फिर क्वेश्चनर फिल नहीं होता है, जिससे सर्चर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. Students in this class activity are required to frame the title and research questions to do internet survey. You are being given 15 minutes to propose the title and research question to initiate internet survey for a specific purpose.